Okay, so let us start your Yes, snap sir. review for thermodynamics. Okay, so first of all, just tell me, Yes, sir. how do you define the thermodynamic equilibrium? Basically, thermodynamic equilibrium consists of three equilibrium: thermal equilibrium, mechanical equilibrium, chemical equilibrium. Thermal equilibrium means that temperature at each and every point within the system will be same. Mechanical equilibrium mean that there will be no bulk movement of the liquid, there will be no bulk movement of the fluid. And in the chemical equilibrium mean that the chemical composition of the system will not change. That is, there should not be any chemical reaction going on. All the three equilibrium combined makes a thermodynamic equilibrium. Okay. Can you provide us some real life example of the thermodynamic equilibrium? So real life example. Sir, I'm giving survey time over, sir. Yeah. Take your time. Sir, if we consider a serval having 20 degree each, and if we place the reservoir having 40 degree, and we place the one end of the wall to 40 degree each, then at some time there will be Repeat unsteady it once condition more. in the. Just repeat it once Yes, sir. more. Sir, there is a wall having 20 degree each temperature on the both the side, and we place the reservoir having 40 degree temperature. And if we place one end of the wall to the 40 degree thermal reservoir, then by the time there will be unsteady equilibrium. But as the time passes, the thermal equilibrium will be established of the 40 degree temperature. That as it is getting heat from the 40 degree thermal reservoir, and it is giving heat also to the 20 degree temperature wall to the other end of the wall. The thermal equilibrium will be established. One end will be 40 degree, other end will be 20 degree, and the temperature profile will be linear. But that's not the correct case because as the heat flows from the reservoir to the wall, then the corresponding temperature of the wall is going to be Yes, increased. sir. At some point after the Sir, attenuation but of the steady flow, the left side of the wall is going to have an increase in temp is going to have a change in temperature. The temperature will be increased from 20 to 40 degrees. yes, sir. Sir, I'm not recalling a perfect example at this moment, sir. Okay. Okay, just tell me one thing. How do we write the first law of thermodynamics for an unsteady flow? Sir, unsteady flow. Hmm. Sir, I can write, sir. Yeah, just write it. Yes, sir. Sir, it is basically the sir. It is Yes. Continue. Sir. It is basically the expression of Q in net minus work out net is equal to M out H out minus M in plus M2 U2 minus M1 U1. Sir, I can explain the equation. Sir, we can consider the charging of a tank. In the state 1 it is empty, therefore m1, what is m1 representing the initial state, m2 representing the final state, mn representing the vast amount of matter is entering into the control volume, and amount representing the what amount of the control matter is leaving the control volume. Okay. Okay, that's okay. Okay, and how do we write the mass imbalance equation? Sir, mass balance equation. Yeah. Sir, it is basically the m in is equal to m out, rho 1 a1 v1 is equal to rho 2 a2 v2. Okay. Okay, what is the difference between a simple adiabatic expansion and the free expansion process? Sir, simple adiabatic. Adiabatic expansion and the free expansion process. uh, Sir, firstly, in case of the free expansion, it is nothing but the expansion of the air in vacuum. And in case of the adiabatic expansion, the expansion in which there is no transfer, there is no flow of heat. Delta Q is equal to 0. The expansion in which there is no flow of heat. We can see in the various process such as Otto cycle, where there is adiabatic expansion and adiabatic compression, isentropic expansion. If it is reversible, then it is called reversible adiabatic. Okay. You can just tell me one thing.
Yes, Suppose sir. if there is any material, okay, any body, okay, it is and it has attained the, let us say, dead state. Okay, then tell me, uh, does the material possesses the internal energy at that time? Sir, can you please If the repeat once material again, sir? if the material has attained the dead state, then the material is possessing the some type of internal energy or not? If the material has been dead state. Yeah, if the material has Mm, attained the dead state, then then does the material possesses the internal energy? yes, sir. Sir, give me a moment, sir. Sir, it will have sir, internal energy, sir. Okay, why? We can take example, so in order to explain the dead state in the proper way, we can take example of the available energy. We are extracting the heat from a potato until it comes to the dead state, that is surrounding temperature. But internal energy depend on the temperature factor. That is, it is for the ideal gas, it is basically depend on the temperature, and internal energy is a sum of microscopic energy, and potential energy, kinetic energy. Therefore, it will be having at that temperature, sir. Internal energy will be not existing in case of the absolute zero, sir, and when the molecular motion ceases. Okay, so can you provide me some practical examples of the low grade energy and the high grade energy? Sir, definition, sir. Practical example of low grade and high grade energy. Sir, practical example of low grade energy. Sir, Yes. yes, sir. Sir, practical example of the high grade and low grade energy is, sir, high grade energy is basically work, low grade energy is basically heat. And as we see the heat engine, the work is used to drive the engine, and the heat that is That's lost in okay. the I just want to crankshaft, know the this practical is, examples. sir, That I a know. real life example. I just want to know the real life practical examples of the high grade energy as well as the low grade energy. Sir, real life. Sir, we can take the example of slider crank mechanism where we will be getting the power, which is basically the high grade energy, and the heat lost is low grade Okay, tell me energy. one thing. Slider crank Uh, mechanism. the hydroelectric power plant, the hydroelectric energy, the water energy, let us say, or pressure energy, is a high grade energy or a low grade energy? Sir, pressure energy, hydroelectric energy. Yes, Mm, water power. I'm talking about the hydropower, water power. Is it a high grade energy or a low grade energy? What about the nuclear Sir, it energy, is basically thermal, high. nuclear Oh, energy, okay. and geothermal energy? Hmm? Mm, Sir, it is basically high grade energy. ओके, जस्ट प्लीज लेट मी प्रोवाइड फीडबैक। देखो, आपके पास यहाँ पे जो आंसर्स आप दे रहे हो ठीक है, स्टार्टिंग में जो आपने आंसर दिया वो ठीक है। ये कुछ कुछ जगह पे आप लैग कर रहे हो, उसको एक बार देखिए जरा आपके यहाँ पे। तो मैं सिंपली एक्सप्लेन कर रहा कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स डिफाइन करो फॉर आपका यहाँ पे फॉर अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, तो उस केस में सिर्फ आपको इतना डिफाइन करा था कि जो अनस्टेडी फ्लो है एक तरह से ओपन सिस्टम में है। ठीक है, तो जब भी हम ओपन सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे मास ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर दोनों आपके पास होगा। ठीक है, तो जब भी आप फर्स्ट फ्लो थर्मोडायनामिक्स के बाद जब आप देखोगे तो हमेशा आपको मास बैलेंस और एनर्जी बैलेंस दोनों ही करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एनर्जी इंटरेक्शन का वे है ये बाय हीट, बाय वर्क और बाय मास। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपके पास जब भी ऐसे इक्वेशन डिफाइन करते हैं हमेशा मास बैलेंस की इक्वेशन बताओ, मास बैलेंस क्या होगा, तो उसके बाद आप यहाँ पे प्रेजेंट करोगे एनर्जी बैलेंस। ठीक है, इसका क्वेश्चन आता है। तो उसके बाद जब आपको पूछा हाई ग्रेड और लो ग्रेड एनर्जी के बारे में जरूर देखना। ठीक है, इसमें काफी तरह की एनर्जी हमारे पास आता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास यहाँ पे, जियोथर्मल एनर्जी लो ग्रेड एनर्जी में चली जाएगी, आपके पास वाटर पावर आपके पास हाई ग्रेड एनर्जी में चली जाएगी। तो इनका आपको यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए क्या होती है। ठीक है, बाकी आपके पास अगर सर, हम यहाँ पे न्यूक्लियर बात हाई करें, ग्रेड एनर्जी होगी, सर। न्यूक्लियर हाई ग्रेड एनर्जी आपके पास यहाँ पे होगी। लेकिन अगर आप उसमें बात करोगे वो आपके पास किसमें वो किसमें आपके पास यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है, वो थर्म लो ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है ना, क्योंकि आपका न्यूक्लियर ठीक लेवल है। पे देखोगे तो आपका रैंडम मोशंस है, उसके बाद वो आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन एनर्जी में लो ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है जब वो न्यूक्लियर टूट रहा है।
अब इस केस में आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाँ, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का फैक्टोरियल आपके पास। उसमें जो अपने एग्जांपल दिया वो सही नहीं था। उसमें सिंपली मेंशन करते थे कि अगर मेरे पास 4 ग्लास ऑफ वाटर लेटर से, तो उसको मैं सिंपली रूम पे अगर रखता हूँ, तो एक टाइम के बाद स्टार्टिंग का टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से क्या होगा, आपके पास यहाँ पे एनर्जी इंट्रैक्शन हो रहा है, तो वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को अटेन नहीं कर रहा। हाँ तो काफी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो आपके पास क्या करेगा, एक यहाँ पर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को अचीव यहाँ पे कर लेगा, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम वहाँ पे अचीव होगा, वहाँ पे कोई भी तरह का केमिकल पोटेंशियल नहीं है, और आपके पास यहाँ पे वैसे कंडीशन भी मेंटेन, इसीलिए उसका यस प्रोपर सर। जाना। थोड़ा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट, मैथमेटिकल डेरिवेशंस करना शुरू करो, कि जैसे बीआरसी हो गया, एनकेसीएल हो गया, इसके लिए रिक्वायर्ड होता है कि आपके पास मैथमेटिकली आपको डेरिवेशन भी लिखना आनी चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, किस फॉर्म में लिखते हो, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कोई डाउट हो गया आपको कुछ, ठीक पूछना हो? नहीं सर। सर क्या, सर थर्मोडायनेमिक्स में जैसे न्यूमेरिकल पार्ट में भी सर जाना है एनपी से नहीं, यूजुअली। जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसे इतना कह रहा हूँ कि आपको बस ये बताना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। जैसे हमने जो फर्स्ट लॉ की, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ के थर्मोडायनेमिक्स की बात बताई थी, सेम उसी तरह से हाँ आपका यहाँ पे जो बाकी रिमेनिंग टॉपिक है उसको भी चलेगा बात देंगे। ठीक है सर। ओके, जैसे एंट्रोपी ठीक। वगैरह हो गया आपके पास, यहाँ पे कोई भी अवेलेबिलिटी वाला पार्ट हो गया, साइकिल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, कार्नो साइकिल के रिगार्डिंग है, और एफिशिएंसी सीएपी की एडमिशन। ओके, ओके सर। ओके, जस्ट थैंक यू। ओके।